वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर मंसूर सलीम और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फर्स्ट ईयर इंग्लिश एनुअल एग्जामिनेशन का टारगेट पेपर। लिहाजा फर्स्ट ईयर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और होम इकोनॉमिक्स के वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस साल एनुअल एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम ना सिर्फ कंप्लीट टारगेट पेपर डिस्कस करेंगे बल्कि एग्जाम्स के हवाले से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को भी देखेंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले आपने सेक्शन ए में प्रोज, पोएट्री, प्ले और ग्रामर में से 20 MCQs अटेम्प्ट करने हैं और इन MCQs को बहुत अच्छी तरह अटेम्प्ट करने के लिए हमारे इस चैनल पर इन तमाम टॉपिक्स की उर्दू एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट MCQs की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं, जिन्हें आप इस PDF फाइल में यहाँ इस YouTube प्ले बटन से एक्सेस कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि एग्जाम से पहले इन तमाम एक्सप्लेनेशंस और इंपॉर्टेंट MCQs की वीडियोस को एक मरतबा लाजमी रिवाइज कर लें ताकि आपको एग्जाम में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और अगर बात की जाए सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो सब सेक्शन 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी प्रोज में यूनिट नंबर 1 कायद ऑन 11 अगस्त 1947 में हमारे पास ये 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज द विजन ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और व्हाट वाज द काइट्स विजन अबाउट रिलीजियस फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई वाज द काइद फीलिंग ऑनर्ड व्हाइल एड्रेसिंग द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हिच इज द ग्रेटेस्ट कर्स अकॉर्डिंग टू द कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ फार द की आइडियाज ऑफ काइट्स स्पीच आर एप्लीकेबल टू द प्रेजेंट सिनेरियो। और क्वेश्चन नंबर 5 है आई शैल ऑलवेज बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले विदाउट एनी पॉलिटिकल लैंग्वेज, प्रेजुडिस और इल विल। इलैबोरेट दीज वर्ड्स। यूनिट नंबर 2 वंस मोर टू द लेक में हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डज द राइटर टेक अ वेकेशन एट दिस पर्टिकुलर लेक। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ हैज द लेक चेंज्ड सिंस व्हाइट वाज अ बॉय। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई इज द अराइविंग एट द लेक लेस एक्साइटिंग नाउ देन इन द पास्ट। और क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट काइंड ऑफ सेंसेशन persisted and grew in the mind of writer और why did the writer feel dual existence। यूनिट 3 द नेकलेस में हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है why did Mr. Loisel expect his wife to be pleased to receive the invitation। क्वेश्चन नंबर 2 है how did Mr. Loisel contribute to the cost of the new necklace। क्वेश्चन नंबर 3 है how had Madam Loisel's sacrifices been in vain। और क्वेश्चन नंबर 4 है what was Madam Forestier's reaction when the necklace was returned और what was the surprise ending of the story The Necklace। यूनिट नंबर 4 टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ इज द टेक्नोलॉजी बून फॉर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज ई कॉमर्स और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स इन टुडेस वर्ल्ड। और क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज टेक्नोलॉजी सिक्योर ह्यूमंस फ्रॉम कैलेमिटीज। यूनिट 5 माय बैंक अकाउंट में हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई वाज देयर अ रोर ऑफ लाफ्टर व्हेन द ऑथर लेफ्ट द बैंक और व्हाई डिड द रोर ऑफ लाफ्टर फॉलोइंग द ऑथर लीविंग द बैंक और व्हाई डिड स्टीफन लीकॉक रश आउट ऑफ द बैंक आफ्टर गेटिंग हिज टोटल अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट मिस्टेक डिड द ऑथर मेक व्हेन ही रोट द चेक, व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट और व्हाट मिस्टेक डज द ऑथर मेक व्हेन ही ट्राइज टू डू बिजनेस इन अ बैंक, why does he do so। Question number 3 है what was the manager's reaction when the author told him that he would like to see him alone। और question number 4 है why is it wiser to keep one's money in a bank than to hoard it in one's home। यूनिट नंबर 6 सेल्फ रिलायंस में हमारे पास ये 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज सेल्फ रिलायंस और व्हाट मेक्स अ मैन ग्रेट अकॉर्डिंग टू रॉल्फ वेल्डो एमरसन। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द मार्क ऑफ जीनियस अकॉर्डिंग टू द एमरसन। और क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डज द ऑथर एम्फसाइज ऑन डेवलपिंग वंस ओन इंडिविजुअलिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आई मस्ट डू इज ऑल दैट कंसर्न्स मी नॉट व्हाट द पीपल थिंक, डू यू एग्री टू दिस स्टेटमेंट, गिव रीजंस for your agreement or disagreement। और क्वेश्चन नंबर 5 है what is Emerson trying to convey with the contrast between civilized and the naked savage। यूनिट नंबर 7 struggle for an education में हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं,
जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर सम ऑफ द ऑब्स्टेकल्स दैट बुकर टी वॉशिंगटन फेस इन हिज परसूट ऑफ एन एजुकेशन, और व्हाट डिड ही हैव टू गो थ्रू इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन एट द हैम्पटन इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई वाज द बॉय इंस्पायर्ड टू गो टू हैम्पटन। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड द राइटर नॉट मेक अ फेवरेबल इंप्रेशन ऑन द हेड टीचर। यूनिट नंबर 8 अ वॉयज टू द सिटी ऑफ लाइन्स में हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ इज सिंगापुर कनेक्टेड टू मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब ब्रीफली द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगापुर पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज सिंगापुर कीप इटसेल्फ क्लीन, व्हाई इज इट कॉल्ड मिस्टर क्लीन। और क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई सिंगापुर इज कॉल्ड द फ्यूजन ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट। यूनिट 9 चूजिंग करियर में हमारे पास ये 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है what are the differences between a job and a career. Question number 2 है why should you choose a career that interests you. Question number 3 है what is the difference between an extroverted person and an introverted person. Question number 4 है why is it necessary to consult a veteran of the field before choosing a career. और question number 5 है why is it wiser to have a backup plan. Unit 10 pearls of wisdom में हमारे पास ये 4 questions important हैं, जिनमें से question number 1 है what did the wealthy man asked the poor brother and what was his reply. Question number 2 है how does a professional man earn respect according to the sage. और question number 3 है who is lucky and unlucky according to the maxim narrated by Sheikh Sadi. और question number 4 है confide not to a friend every secret thou possess. How know you that he will not sometime become thy foe. How far do you agree and why. इसके बाद सबसेक्शन 1 पोएट्री में पोयम नंबर 1 द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ में हमारे पास ये 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डज हेनरी वोटन्स हैप्पी मैन एंजॉय और पास हिज टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज हेनरी वोटन्स मैन यूज फॉर हिज डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हैप्पी मैन एज डिस्क्राइब्ड इन द पोयम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द मैसेज थीम और सेंट्रल आइडिया कन्वेड इन द पोयम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। और क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द पोयम एंड द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस। और क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द पोयम एंड द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस। Who has his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressors great. पोयम नंबर 2 डोंट क्विट में हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नॉट क्विटिंग एज सजेस्टेड इन द पोयम डोंट क्विट। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डज द पोएट टर्म लाइफ क्वेयर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इफेक्ट डज द पोयम डोंट क्विट क्रिएट ऑन द रीडर, ऑन व्हाट इज द मैसेज और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम डोंट क्विट। और क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द पोयम एंड द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द फॉलोइंग lines. Success is failure turned inside out, the silver tint of the clouds of doubt, and you never can tell how close you are. It may be near when it seems afar. So stick to the fight when you are hardest hit. It's when things seem worst that you mustn't quit. Poem number 3 Ozymandias में हमारे पास ये 4 questions important हैं, जिनमें से question number 1 है what was written on the pedestal of the statue of Ozymandias. Question number 2 है what is ironic about the fate of Ozymandias, or what irony has been presented in the poem Ozymandias, or how does the poem Ozymandias demonstrate Shelley's use of irony. Question number 3 है how does the poem Ozymandias reflect on the theme of power and its transience, or what is the message of the poem Ozymandias and how does it relate to contemporary society, or how does the poem Ozymandias explore the theme of mortality. और question number 4 है identify the poem and the poetic devices used in the following lines. And on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty and despair. Nothing beside remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare. The lone and level sands stretch far away. Poem number 4 Good Timber में हमारे पास ये 4 questions important है, जिनमें से question number 1 है how does the poem Good Timber use extended metaphor to convey its message, or what is the significance
significance of the title of the poem Good Timber? Question number 2 है why does the poet suggest people to be like good timber? Question number 3 है what is the message, essence, moral or central idea of the poem, or how the message of the poem Good Timber might be applied to everyday life and personal growth? और question number 4 है identify the poem and the poetic devices used in the following lines. Where thickest lies the forest growth, we find the patriarchs of both, and they hold counsel with the stars, whose broken branches show the scars of many winds and much of strife. This is the common law of life. पोएम नंबर 5 लूसी ग्रे में हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई इज लूसी ग्रे बिलीव टू बी अ लिविंग चाइल्ड इवन आफ्टर हर डेथ, और व्हाट इज द कॉमन बिलीफ ऑफ पीपल अबाउट लूसी ग्रे, और व्हाट डू पीपल स्टिल मेंटेन अबाउट लूसी ग्रे एंड व्हाई. क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड लूसी ग्रे मीट विद अ ट्रेजेडी, और व्हाट हैपेंड टू लूसी ग्रे ऑन हर वे टू द टाउन, और ब्रीफली नरेट द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ लूसी ग्रे. क्वेश्चन नंबर 3 है what is the theme, message or central idea of the poem Lucy Gray, और question number 4 है identify the poem and poetic devices used in the following lines. You yet may spy the fawn at play, the hare upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. पोएम नंबर 6 द एबट ऑफ कैंटरबरी में हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डिड किंग जॉन बिकम जेलस ऑफ द एबट ऑफ कैंटरबरी, और व्हाट वाज द एबट ऑफ कैंटरबरी अक्यूज्ड ऑफ एंड बाय whom, और व्हाट वर द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट द एबट ऑफ कैंटरबरी बाय किंग जॉन. क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ वाज द एबट बेनिफिटेड बाय हिज शेफर्ड्स बोल्ड आंसर्स, और हाउ डिड द शेफर्ड सक्सीड इन सेविंग द लाइफ ऑफ द एबट of Canterbury. Question number 3 है what were the 3 intelligent answers given by the poor shepherd to King John, और question number 4 है identify the poem and the poetic devices used in the following lines. Oh, these are hard questions for my shallow wit, nor I cannot answer your grace as yet, but if you will give me but 3 weeks space, I will do my endeavor to answer your grace. पोएम नंबर 7 सुर कहोड़ी में हमारे पास ये 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ इज कहोड़ीज कैरेक्टर डिपिक्टेड बाय द पोएट. क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर एंड व्हाई डू कहोड़ीज स्पेंड देयर डे एंड नाइट्स. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट रिवॉर्ड डज अ कहोड़ी गेट आफ्टर हिज वर्क, और क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द थीम, मैसेज, एसेंस और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम सुर कहोड़ी, और क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द पोएम एंड द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस. Mother, I saw those who have beloved seen. One must stay a night with those who with God have been. Their recognition become a raft in this ocean of the world. और पोएट्री के बाद सबसेक्शन 3 प्ले अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट में हमारे पास ये 8 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई वाज क्रीटॉन इंटरेस्टेड इन विजिटिंग द प्लैनेट अर्थ. क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ इज क्रीटॉन एबल टू कम्युनिकेट विद द पीपल ऑन अर्थ. क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स टू क्रीटॉन्स विजिट. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स डज क्रीटॉन possess and how does he exhibit these powers. क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब the main comic incidents of the play. Question number 6 है how is media depicted in the play. Question number 7 है describe the scene of the arrival of the flying saucer. और question number 8 है which character in the play A Visit to a Small Planet do you like most and why. और अगर बात की जाए सेक्शन बी में सब सेक्शन 4 ग्रामर की, तो आपने इन 12 टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, जिनमें शामिल है सफिक्स एंड प्रीफिक्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, पंक्चुएशंस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, मॉडल वर्ब्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, नरेशंस, एक्टिव पैसिव, करेक्शन ऑफ एरर्स और डू एज डायरेक्टेड. सेक्शन बी के बाद अगर बात की जाए सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस की, तो जैसा कि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा सेक्शन सी अनसीन होता है, और इस साल न्यू मॉडल पेपर आने के बाद से सेक्शन सी में हमें टोटल 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, जबकि हर क्वेश्चन में हमें एक एक्सक्लूसिव चॉइस भी दी जाएगी, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है पैसेज कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग का, जिनकी तैयारी आप फिजिकली क्लासरूम में करते हैं और इनको याद नहीं किया जा सकता. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग.
ईमेल राइटिंग में हमारे पास ये 5 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से नंबर 1 है राइट अ फॉर्मल ईमेल टू योर कॉलेज प्रिंसिपल आस्किंग और रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ योर टीम टू पार्टिसिपेट इन सिंध इंटर कॉलेज टूर्नामेंट। नंबर 2 है राइट अ फॉर्मल ईमेल टू योर कॉलेज प्रिंसिपल आस्किंग हिम और हर टू ग्रांट अ फुल कंसेशन इन ट्यूशन फी। नंबर 3 है राइट अ फॉर्मल ईमेल टू योर कॉलेज प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू कॉल द स्टूडेंट टीचर्स मीटिंग बिफोर एग्जाम। नंबर 4 है राइट a formal email to your college principal requesting him her to grant permission for an educational visit to University of Sindh Jamshoro. Number 5 है write a formal email to the producer of a news channel requesting him or her to produce some motivational TV programs on education. जबकि रिपोर्ट राइटिंग में हमारे पास ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से नंबर 1 है write an informal report on the celebration of Independence Day on 14th August at your college. Number 2 है write a formal report on the curricular and co-curricular facilities provided by your college administration. Number 3 है write a report about student week held in your college, including events, days and dates. ईमेल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नैरेटिव राइटिंग और एसे राइटिंग। नैरेटिव राइटिंग में हमसे कहा जा सकता है कि राइट अ नैरेटिव अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट दैट इन्फ्लुएंस्ड यू ग्रेटली और चेंज्ड यू इन अ सिग्निफिकेंट वे, और राइट अ नैरेटिव अकाउंट ऑफ अ हैप्पी, सैड और सरप्राइजिंग इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ। जबकि ऐसे राइटिंग में हमारे पास ये 6 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से नंबर 1 है क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल या बास्केटबॉल वर्सेस फुटबॉल। नंबर 2 है फिजिकल गेम्स वर्सेस ऑनलाइन गेम्स। नंबर 3 है बुक्स वर्सेस मोबाइल फोन्स। नंबर 4 है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोशल मीडिया। नंबर 5 है सोशल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ और नंबर 6 है ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस फिजिकल एजुकेशन। और सबसे आखिर में हमारे पास है सीवी राइटिंग और कवर लेटर, जिसमें आपको कोई चॉइस नहीं दी जाएगी और आपको एक ही टॉपिक यानी जॉब एडवर्टीजमेंट पर सीवी और कवर लेटर ड्राफ्ट करने होंगे। क्योंकि सीवी और कवर लेटर के हवाले से मैंने ऑलरेडी एक बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें सीवी और कवर लेटर का पैटर्न सिखाने के साथ साथ एक ऐसा इजी और कस्टमाइज्ड टेम्पलेट भी बताया है जिसे आप अपने पेपर में आने वाले हर तरह के जॉब एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी उस पैटर्न को समझने के बाद आप डिफरेंट जॉब एडवर्टीजमेंट के लिए अलग अलग सीवीज और कवर लेटर्स को ड्राफ्ट करने की झंझट से आजाद हो जाएंगे। और इसके साथ ही हमारा टारगेट पेपर यहाँ पर एंड होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मुझे कमेंट्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज के साथ शेयर कीजिए।